के दौर में हर चीज कोर्ट क्यों पहुंच रही है? क्योंकि जो पूरा नक्शा है हमारे संविधान का, जो पूरा नक्शा है हमारे देश का, हमारी जो भी लॉज है, वो सब चैलेंज किया जा रहा है। कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर वो बदल गया है। अब मंदिरों के ऊपर विवाद उठ गए हैं। हिजाब, क्योंकि वो मुसलमान खवातीन, कुछ मुसलमान खवातीन पहनना चाह रही हैं, वो भी कोर्ट पे आया है। हालांकि वहां स्प्लिट जजमेंट था, लेकिन एक जजमेंट जो एक जज ने लिखा, बहुत ही शानदार चीजें उन्होंने कही पर्सनल चॉइस के बारे में, वो अच्छा जजमेंट था। लेकिन हर चीज को लेकर हम लोग कोर्ट में पहुंच रहे हैं। So the court is the last, when the court becomes the last place for every civil challenge, for everything, then you know that the institutions of the country are in some kind of trouble. In the case of journalists, the cliche is ki speak truth to power. I say speak truth about power. That we should do, and I hope to continue to always be one of the journalists who can do so. We are living in an age where everything about the nation state is being transformed. हम लोग ऐसे दौर में गुजर रहे में जिंदा हैं कि हर चीज बदल रही है, और इतनी तेजी से बदल रही है कि बिल्कुल एक झोंके में लग रहा है, झटके में सब कुछ जा रहा है। जो उम्मीदें हमारे संविधान में थी, जो हम सब की थी, जिस मुल्क में मैं बड़ी हुई, कभी ये नहीं लगा, किसी ने हिम्मत नहीं की कि बताए कि ये आपका मुल्क नहीं है। अब सब कहते हैं, काफी लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं, मुंह पे कहते हैं, टीवी शोज पे कहते हैं, और लेकिन और धमकियां मिलती हैं। ये रूटीन हो गया है मीडिया के लोगों के लिए, धमकियां मिलती हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, ये सब होता है आज के दौर में। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहूंगी कि ये मुल्क फिर भी बहुत यूनिक मुल्क है। दुनिया में कहां आपको ऐसा मुल्क मिलेगा जहां इतनी सारी भाषाएं हों, जहां इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हों, और तो वी वर नेवर परफेक्ट from the very beginning. We had a very big challenge. I also teach in some universities, so I often tell my undergraduate students, I open the currency note and I say, just look at the languages on the currency note. There is no country which has that. You know, there is no country which has so many languages, so many traditions, so many diversities as we do. I tell them that. I said, first, then we can see the imperfections. We can see the long distance we have to travel. We all know, gathered here today, what is wrong, what is going wrong in our country. I would also say that there is still a lot to protect, because we have still not gone through the horrors that many parts of the world have gone through. I happened to be in Europe this summer. I was staying with a friend somewhere in France, and not only, so they created what they thought were these perfect Western societies, और अब वहाँ पे वही दोस्त जहाँ पे हम रूरल फ्रांस में, मैं 2 महीने वहाँ थी, रूरल फ्रांस में, वहाँ पे अब वो लोग उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा, कह रहे हैं कि इस बार हीटिंग वगैरह शायद नहीं होगी, लेकिन उसके अलावा वो तो इनकन्वीनियंस ऑफ हाई स्टैंडर्ड लिविंग के जो लोग हैं, उनको जो इनकन्वीनियंस सफर करनी पड़ रही है यूक्रेन के युद्ध के बाद। बट not Europe has had world wars on a scale. Russia has a dramatic history. China, all these countries, they have known totalitarian regimes. I have traveled to Iran. It is a very interesting country. Today there is a protest by a section of Iranian women. I have written about this recently extensively. So जब मुझे बहुत लोग सराउंड कर देते हैं और कहते हैं सब खत्म कर दिया, मातम का वक्त आ गया, तो मैं कहती हूँ नहीं, बहुत कुछ बचा भी है। हम लोग सब we are in solidarity, and there are many things to be preserved here. Today we are
standing opposite the Supreme Court. I know many people would be disappointed in the verdict that has come in the case of Professor Sai Baba. There is no doubt about that. We are also living in an age where court verdicts are so important. पता नहीं आप लोग कितने लोग यहाँ तो हमारे मंच में सब लॉयर्स बैठे हुए हैं और मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर, ये PUCL के सिविल लिबर्टीज के जंग के बारे में आपको मुझसे बेहतर बताएंगे। मैं पत्रकार हूँ, मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं सवाल पूछती हूँ, मुझे भी धमकियां मिलती हैं, लेकिन फिर भी मैं विक्टिम नहीं हूँ। बहुत लोग हैं असल में, मेरी फिर भी आवाज बुलंद है, मैं आपके सामने आके बोल रही हूँ। हालांकि लोग आज के दौर में कहते हैं आप कहीं ना बोलिए, कुछ ना बोलिए, क्योंकि आप ऐसे एक समुदाय से हैं जहां हर शख्स प्रोफाइल होगा, लेकिन आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट आई मस्ट लूज माय वॉइस और आई मस्ट बिकम साइलेंट। सो broadly in this you have called it liberty, equality, fraternity. There are many people whose liberty is being questioned. Equality was always highly unattainable in Indian society. Let's not pretend that the idea of unequal citizenship has just dawned upon us today. Let us be conscious of the nature of the structures in our society which are controlled still by one section of society, including the same media that I come from. There has just been a report published, I have shared it on my Twitter handle, that 90% of media ownership is still held by one section of the upper caste. There is no Dalit or Adivasi representation at all. These are very, very crucial issues. We tend to ignore all these issues. So that one section of my own media from where I am, all the decision making, 90% is in one section of Indian society. I think these are also things we have to focus on. We are, of course, there is so much hate speech and violence targeted at Muslims, but let us not forget that actions against Dalits and Adivasis continue without being publicly declared as such. Just a few days ago in a house in Karnataka, there was a report of 16 Dalits being locked up in the home of a BJP supporter. It came out, it was carried by all the media outlets. Just some months ago, there was a report of a member of the Bharatiya Janata Party in Jharkhand tying up her Adivasi maid, abusing her. Doing all of this has also happened. These crimes also continue without the focus that the Hindu-Muslim crimes get today because they are part of a political design. अभी दिल्ली में ही hate speech हुई, उसमें एक member of parliament भी शामिल थे, उन्होंने economic boycott की बात की है, और लेकिन उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ पे हाई कोर्ट में एक जस्टिस मुरली, उनको हटाया गया जब उन्होंने कुछ साल पहले, he was transferred out, जब उन्होंने ये वही दिल्ली के नेतागढ़ ने जो हेट स्पीचेस की थी उसके बाद उनको ट्रांसफर आउट किया है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने खबर पढ़ी कि उनको ट्रांसफर, उसके बाद वो उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए थे, फिर उनका ट्रांसफर होना था तमिलनाडु, शायद वो रुका हुआ है। हमारे लॉयर फ्रेंड्स ये सब अपडेट्स मुझसे बेहतर जानेंगे। तो हिंदुस्तान में मैं अपने तरफ से ये कहना चाहूंगी कि हिंदू मुस्लिम बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये जो जिस तरह से अब मीडिया आउटलेट्स भी लिख रहे हैं, हिंदू साइड has to fight some more. What Hindu side are you talking about? I am talking with reference to the cases in Banaras, in Varanasi court. जिस तरह से भाषा इस्तेमाल कर रही है, we can say the petitioners, we can say, I think we, as a journalist, I would say we have to be careful. And this was in a very respected media outlet. The Hindu side, the Muslim side, even in the language, we have to become careful. We can say the petitioners in this case. Because as I have said again and again, I say it again at every public time I'm asked to, we are very, very diverse. Nothing is ever over till it's over. You know, nothing is ever ends. We are very diverse.
and we do now and then get some kind of brilliant judgments, and then we are disappointed. But everything, आज के दौर में हर चीज कोर्ट क्यों पहुंच रही है? क्योंकि जो पूरा नक्शा है हमारे संविधान का, जो पूरा नक्शा है हमारे देश का, हमारी जो भी लॉज हैं वो सब चैलेंज किया जा रहा है। कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर वो बदल गया है। अब मंदिरों के ऊपर विवाद उठ गए हैं। हिजाब, क्योंकि वो मुसलमान खवातीन, कुछ मुसलमान खवातीन पहनना चाह रही हैं, वो भी कोर्ट पे आया है। हालांकि वहां स्प्लिट जजमेंट था, लेकिन एक जजमेंट जो एक जज ने लिखा, बहुत ही शानदार चीजें उन्होंने कही पर्सनल चॉइस के बारे में, वो अच्छा जजमेंट था। लेकिन हर चीज को लेकर हम लोग कोर्ट में पहुंच रहे हैं। तो द कोर्ट इज द लास्ट, व्हेन द कोर्ट बिकम्स द लास्ट place for every civil challenge, for everything, then you know that the institutions of the country are in some kind of trouble. But क्योंकि I've been a journalist for a long time, लेकिन इतना कि कोर्ट्स पर नजर रखें कि आज क्या जजमेंट आएगा किस चीज को लेकर, ये कभी नहीं हुआ था। लोग पॉलिटिकल ब्रीफिंग्स में जाते थे, पार्टी ऑफिसेज में बैठते थे। कोर्ट की अहमियत हमेशा थी, ये मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अब तो डेली अहमियत बन गई है। मीडिया पर्सपेक्टिव से मैं कह रही हूँ, क्योंकि पूरा नक्शा मुल्क में बदलने की कोशिश हो रही है और हर चीज चैलेंज हो रही है। तो मैं क्या कहूँ आप लोगों से, आई एम हियर इन सपोर्ट। आई वाज आस्क्ड बाय some of the people, and then I was told by others, you must never go publicly to such platforms, and I said, that is when I said I will go, I will participate, I will be there in solidarity with whatever efforts there are for citizens. I do believe that there is a lot which has been lost, but there is a lot left to fight for, and we must keep doing that. Thank you very much.